Hello everyone. How are you all? Doing great? Okay, so I welcome you all to my YouTube channel. So last time हमने quadratic equations के कुछ questions देखे थे, right? Okay. So इस सेशन में भी हम लोग कुछ questions देखेंगे quadratic equation के based पे. Okay. So without any further delay, let's start with our session. So here you can see that you are having a question. So find two consecutive पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर आप 2 लिखते हो तो सेकेंड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 3 होगा, राइट? ओके, if you take 5, then second consecutive positive integer 6, right? So if you look at this carefully, you can say now if you are adding 1 to 2, you are getting your second consecutive positive integer. Here, if you are adding 1 to 5, you are getting 6, right? Okay, so let's write it, because here you can see you don't have positive integer, means आपके पास कोई value नहीं है. तो आप क्या करोगे? Let consecutive positive, okay, I can say two consecutive positive integer. Okay, so integers, that is nothing but first one is your x and the second one is x plus 1. ये easy है, right? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग सम ऑफ whose स्क्वायर, मतलब आपको सम निकालना है जिसका स्क्वायर. ओके, सो इसको स्क्वायर कर देते हैं. प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 365. इजी, राइट? सिंपल है ना? अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखना. यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है, प्लस दिस वन इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365. ओके, अब देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x plus 1 minus 365, because I'm sending this right hand part to the left hand part and it is there in positive, so left hand side पे जाके negative हो जाएगा. आगे देखते हैं, 2x square plus 2x minus 364, अगर आप इस दोनों को subtract करोगे तो 0. अब देखो, यहाँ पे भी आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन अपना काम क्यों बढ़ाना? अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो तो, राइट, हमारे लिए ये इजी हो जाएगा फैक्टर्स निकालना, राइट? एंड हियर यू विल बी गेटिंग हाउ मच? सो 2 1s are 2, 2 8s are and 2 2s are 4 is equal to 0. ओके, अब यहां से हमारे पास क्या आ गया? अब देखो, ये वाला जो 2 है ना, वो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विद दिस and this is your quadratic equation. Why? Because here a is not equal to 0 and it is in the generalized form, that is ax square plus bx plus c. Okay, so let's move ahead. Let's solve this question. So here you can see you are having x square plus x minus 182 is equal to 0. अब इसके मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें? लेट अस स्प्लिट दिस. सो यहाँ पे ये बहुत इजी होगा आपके लिए, देखना. 182, so let's write this 182. अगर 182 को स्प्लिट करेंगे, so 2 9s are prime factorization method आपको आता होगा, right? So 2 9s are 18, 2 1s are, okay? And in Hindi इसको आप अभाज्य गुणनखंड भी बोलते हो. So here this is 3, 3 1s are 3, okay, 3 3s are 9, right? Okay, just a minute. Don't take 3. You need to take 7 from here. I'm so sorry, students. So you need to take 7. 7 1s are 7, 7 3s are. Okay, so you need to get 1 over here, right? Okay, so 13 into these two, multiply these two. So 14, 13 into 14. If you take 14 minus 13, that will give you 1, right? So you got your factors. So let's apply this. So from here, I can say na this one is your x square and minus 182 is equal to 0.
Let's write it 14x and 13x. So this is plus, right? If it is plus, so bigger value will be plus and this one is minus, because plus and minus will give you minus. Then only you are going to get x, right? Okay, so now in these two, you can take x common. So this is your x plus 14, okay, minus. Now what you can take? 13 common. 13x plus 13 ones are 13, 13 fours are 52. 0, okay? So now you can take x plus 14 common, क्योंकि ये दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, राइट? ओके, हमने कॉमन ले लिया. अगर कॉमन ले लिया सो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x बचेगा और इसमें सिर्फ आपका 13 बचेगा. So you are having two factors. Okay, so let's see. So you are having two values. So x plus 14 and the second value is x minus 19. 13 is equal to 0. यहाँ पे भी 0. ठीक है, x is equal to minus 14. क्या ये पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे थे ना? तो माइनस 14 एक पॉजिटिव इंटीजर है? No, right? This is not your positive integer. Okay, so let's look at the second one. So this is 13. Yes, it is a positive integer, right? So here I can say not possible. Okay, so this one is not possible. Why it is not possible? Because in the question they are asking you to calculate the value which is positive integer. So here it is not positive, so that is not possible. So x is equal to 13. So let's calculate the value. So 2 consecutive positive integers are, first one was x, so it is 13. Second one was x plus 1, so it is 13 plus 1. Nothing but your 14. So these two are your answer. So 13 and 14, these two are correct answer. Okay, so I hope it is clear to all of you. तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ध्यान से देखना. The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. Okay, so right angle triangles, फटाफट से एक right angle triangle बना लेते हैं. ठीक है, so this is your right angle triangle. So here it is your 90 degree. Altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than base. So suppose your base is x. Okay, suppose your base is x, but in the question it is saying altitude of the right angle triangle is 7 centimeter less than base. So what will be your altitude? It is x minus 7. Okay, तो ये हमारा निकल गया. अच्छा, एक चीज बताना, आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर. डू यू रिमेंबर दिस? Easy. Base whole square. Okay, you need to calculate hypotenuse this side, right? So AC whole square is equal to P. P how much? P is x minus 7 whole square. Okay, and B, how much is B? So plus x whole square. अच्छा, अब next sentence पढ़ते हैं. If the hypotenuse is 13, okay, so AC की भी value दी गई है. Let's write it then. यहाँ पे 13 लिख दिया, यहाँ पे भी 13 लिख दिया. अब देखो, this one is A minus B whole square, so A square plus B square minus 2AB. So 2 into 7, that is 14x plus x square. Okay, I hope it is clear to all of you. अब हमें क्या करना है? हमें x की वैल्यू निकालनी है. Find altitude. Okay, altitude. ओके, सो आपको x की वैल्यू निकालो या फिर बेस की वैल्यू निकालो, बात बराबर है. अगर आप x की वैल्यू निकाल दिए तो मतलब वैल्यूज आपके सेम नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप a की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको सेकेंड वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन फाइंड ऑल्टीट्यूड. ओके, सो
13 whole square, how much you are going to get? 13 whole square, that is going to give you 169. Okay, 169 is equal to x square plus x square, this one and this one will give you 2x square minus 14x plus 49. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम? 0 is equal to, send this 169 to the right hand side. Okay, so 2x square minus 14x plus 49 minus 169. Easy है ना? easy. ओके, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? लेट्स राइट दिस. सो आई कैन से ना 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x. अब यहाँ से इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 0 2 1. ओके, अब एक और चीज कर सकते हो, यू कैन टेक 2 कॉमन. व्हाई? हियर यू कैन सी यू आर हैविंग 2x स्क्वायर माइनस 14x minus 120, so they are having 2 as common, so 2 common, so x square minus 7x, okay, minus 60. Okay, and this 2 will go to the right hand side, it will be equal to 0. So what is your quadratic equation? X square minus 7x minus 60, right? So let's write this. So here this is your quadratic equation, so x square minus 7x minus 60 is equal to 0. Okay, अब हमारा क्या काम है? अब हमें इसे सॉल्व करना है. So let's see this 60. So prime factorize it. So 2 3s are 0. Okay, अब क्या कर सकते हैं? 2 15. Okay, and 3 5. Okay, so you need to get 7 from them. Okay, so 5 3s are 15. Okay, so if you look at this carefully, which value you are going to get from here? Try this. So 6, these two will give you 6 6 2s are 12, and 12 में minus 12 and plus 5 लिखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? -7. So I can say ना 12 and 5, these two are factors. So let's write it. So x square minus 12x plus 5x minus 60 is equal to 0. So from here x is common, so x minus 12 plus 5 is common, x minus 5 1 जा 5 5 2 जा 20 is equal to 0. आगे क्या कर सकते हैं हम? You can take x minus 12 common, so आगे हमारे पास x plus 5 आ जाएगा is equal to 0. Now here also you can see you are getting two values. Okay, so let's see this. X minus 12 is equal to 0, so x is equal to 12. Okay, so now second one, x plus 15 is equal to 0. So x is equal to minus 15. Minus 15. So base or base can be minus in negative? No. So negative value is not possible. So let's write this. So negative value is not possible. Okay. So this is done. Now x is equal to 7. So what was the question? So you got the value of x. Okay. Okay. So now you need to calculate the altitude. What is the altitude? Altitude is x minus 7. So altitude is x minus 7. So it is 12 minus 7. So how much you are going to get from here? 5, right? So it is going to be 5 centimeters. So let's check the unit. So it is centimeter. So it is your centimeter. 5 centimeter is your correct answer. I hope this question was clear to all of you. So let's begin with the next question. Okay, ये question देखने में बड़ा है, लेकिन this question is very easy if you understand it. Okay, so let's see. A cottage industry produces a certain number of pottery article in a day. Okay, it was observed that on a particular day that the
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। मतलब क्या बोल रहा है, एक पर्टिकुलर डे पे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी मैं रफ से आपको बता रही हूँ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article. It is saying like this, right? Okay, so let's read the question once again. A cottage industry produces a certain number of pottery article in a day. ठीक है, it was observed on a particular day, एक दिन पे ये observation हुई that the cost of each article, so cost of each article is 3 more than that of the twice of the number of articles. अब हमें तो number of articles ही नहीं पता है, so let suppose this value, so let number of articles is equal to x. Okay, अब क्या बता रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट on a particular day the cost of each article, so let's write this, so cost of each article, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हम हमें कुछ नहीं करना होता इक्वेशन फॉर्म करने में, क्या करना होता, क्वेश्चन को रीड करना होता है, यू नीड टू रीड द स्टेटमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू द मैथमेटिकल टर्म। तो यहाँ पे क्या है, each article 3 more than twice of the number of article, easy। अब इतने रुपए खर्चे हो गए, ठीक है। अब क्या बता रहा है, ध्यान से देखना, if the total cost here, if the total cost of production on that day was 90, मतलब एक चीज बताना, अगर एक आर्टिकल पे इतना खर्चा हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिस है, सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट एंड one like 1 kg sugar cost you around 10 rupees, if I ask you get the 2 kg sugar, ओके, 2 kg शुगर लेके आओ, तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली हियर ऑल्सो यू विल बी मल्टीप्लाई, गिवन क्या गिवन है हमारे पास, गिवन ये है हमारे पास x इंटू 3 प्लस 2x इज नथिंग बट 90, इजी। सो यहाँ पे आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया, इफ दिस इज डन तो आपका तो maximum work is done. So now you all are pro in solving quadratic equation, right? Okay, so here you can see you are having 2x squared plus 3x minus 90. Okay, so let's solve this. We are going to solve it together. So let's solve this. So here you are having this equation and here this is your quadratic equation, right? Because it is in the form of ax squared plus bx plus c and a is not equal to 0, right? So let's solve this. So 2x squared plus 3x minus 90 is equal to 0. अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? Who is going to tell this? Okay, so let's see. So 90, okay, 90. So 2, 4, 5, okay, 5, 9 za, 3, 3 za, okay. So now अब हम क्या ले कि आपको 3 आ जाए? Okay, देखना, 3 2 za 6 into 15. Are you going to get 3? No. Okay, so let's see. अगर हम 6 and 15 ले रहे हैं तो हमारे पास नहीं हो रही है वैल्यूज। ओके, सो डिड आई डू सम मिस्टेक ओवर हियर? Okay, so we are left with 2, right? You cannot leave this 2. Okay, so yes, so 2. Now what you can do, 6 2s are 12 and 15. So if you subtract these two, obviously you are going to get 3, right? So let's write this. So 2x squared and here you are having 90 is equal to 0. So let's write this. So this is 12x and 15x. These two are your factors. So here you are having positive value. So let's write here positive, here negative. Okay. So now 2x is common. So x minus 6 plus 15 is common, x minus 6 is equal to 0. Okay, easy है ना, बहुत easy है, right? Okay, so x minus 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे x minus 6 ले लिया कॉमन तो आपके पास 2x plus 15 बचेगा is equal to 0. So now you can say ना x minus 6 is equal to 0. So x is equal to 6.
Okay, so let's read the second factor. So x plus 2x plus 15 is equal to 0. यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 2x is equal to minus 15. So x is equal to minus 15 by 2. So it is possible? No, it is not possible. So इसको हम हटा देते हैं, यहां से आपके पास x आ गया. अच्छा, क्वेश्चन क्या था? फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल एंड द cost of each article. So we have got the value of x. ठीक है, number of articles we have got. Okay, cost of each article. Now you are going to calculate it. Calculate and tell me the answer. So cost of each article is, so let's write this. So cost of each article is nothing but your 3 plus 2x. Do you remember this? So we have written it over here. So 3 plus 2x, and what is the value of x? X is your 6. So let's put the value. So here 3 plus 2 into 6. So 3 plus 6 twos are 12. So from here 15 is your answer. If it is there in rupees, then rupees is your answer, 15 rupees, and 6 is your answer. So if you want to check whether your answer is correct or not, okay, so let's put all the values in the equation. Okay, this equation, let's put it. So if you look at this equation, so you can say, ma'am, it is x into 3 plus 2x is equal to 90. X की वैल्यू हमें मिली थी 16, and what was the value of what was the value of the cost of each article? So that was 15, right? So let's write this 15. So 15 6 are 90 only. So LHS is equal to RHS, means आपने जो कुछ भी बनाया है वो सही है. Okay, so I hope it was clear to all of you. Okay, so in the next class we will be seeing quadratic equation formula. Okay, and how we can use it to solve the quadratic equation. So please stay tuned. So thank you so much all of you for watching it. So bye, have a nice day to all of you.